Good morning, friends. Welcome to the Prelims Booster session. Let us see the first topic, which is Defense Acquisition Council. तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कुछ प्रपोजल्स जो थे इक्विपमेंट परचेज़ करने के लिए डिफेंस इक्विपमेंट उनको जो है मंजूरी दे दी है। उनमें से कुछ प्रपोजल जो है वो हम देख लेते हैं। तो ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है बेसिकली उसी को ही चेयर करते हैं रक्षा मंत्री जी। उन्होंने इसको मंजूरी दी है। तो ये डिटेल्स देखते हैं कि एक तो प्रपोजल है कि 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स बनानी है अंडर प्रोजेक्ट 75-1। तो एक प्रोजेक्ट P-75 है, वो हम फ्रांस के साथ मिलके उसके अंदर हम स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बना रहे हैं। तो उसी का ही है, एक तरह से एक्सटेंशन है प्रोजेक्ट P-75-1। उसके अंदर 6 और कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाने की जो है वो उसको अप्रूवल मिल गया है। अब इसके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो वाली जो स्टेट ऑफ द आर्ट सबमरीन्स होती हैं वो बनाने की बात की जा रही है। तो ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम क्या होता है कि जनरली आपने देखा होगा सबमरीन्स के ऊपर एक पाइप सा लगा होता है जिसको हम स्नॉर्कलर कहते हैं, जिससे जो है सबमरीन के अंदर एटमॉस्फेयर से एयर आती है, तो अंदर जो सबमरीन के अंदर जो लोग होते हैं वो उसी को ही ब्रीथ करते हैं। लेकिन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम में क्या होता है कि ये सिस्टम ऐसा है कि जिसमें जो है एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसको सबमरीन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको बार बार ऊपर जाके जो है एटमॉस्फेयर से एयर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सो दैट जो अंदर के लोग हैं वो ब्रीथ कर सकें। ठीक है, और अंदर जो एयर चाहिए होती है उसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एटमॉस्फेयर से जो है ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इसको डिफेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं। और ये कैपिटल एक्विजिशंस करती है, जो बड़ी बड़ी जो सामान खरीदना होता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए, उनका भी, और जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उनका भी। ठीक है, अब इसको जो हमारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे उनकी रिकमेंडेशन जो 2001 के बाद जो कारगिल वॉर कमेटी जो बनी थी, उसके बाद जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी थी, उन्होंने कहा था कि एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होना चाहिए ताकि हम स्पीड अप कर सकें जो कैपिटल एक्विजिशंस को। ठीक है, अब ये फंक्शंस कुछ दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ लेना, कोई ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसको समझना, ये सिंपल सिंपल से इसके फंक्शंस दिए हुए हैं। Now let us see this topic in English. Defense Acquisition Council. So Raksha Mantri has given has approved basically some proposals regarding the acquisition of some capital equipments for our defense forces. Okay, so let us see what are the details, what kind of equipment are being purchased. Okay, so there is a proposal to uh, construct 6 conventional submarines under project P-75-1. So there is a project P-75 under which India and France are already constructing submarines, conventional submarines. You may be remembering INS Kalavari, Vengi and all that. We have already discussed about that project P-75. So these 6 conventional submarines will be an addition to project P-75. So that's why it is named as P-75-1. Okay, so strategic partnership model we have with France, and we will be constructing this. These 6 conventional submarines will be air independent, will have air independent propulsion system. So what is air independent propulsion system? You may have seen that in a submarine there's a pipe like conduit, which we call a snorkel, through which the submarine gets atmospheric air or oxygen. Okay, so in case of air independent propulsion system, all these conventional non-nuclear submarines, they do not need to go up so as to take the atmospheric oxygen, or they even don't need to use that snorkel to get the atmospheric air or oxygen. So this is an independent propulsion system. It generates air inside the submarine itself through this technology. So that's why we are using it. Okay, so now let us see about something about Defense Acquisition Council. It is chaired by Defense Minister. It is basically designed to acquire capital assets for the three defense services and the Indian Coast Guard also. It was recommended by the group of ministers recommendation, which was formed after the Kargil war in 2001. And in this 2001, this reforming the national security system, the GOM, which formulated this uh, report, it recommended that there should be there should be a defense acquisition council, so that we can expedite the procurement process for these defense forces. Okay, so based on that input, this defense acquisition council was formed. Okay, so these are the functions of this council. You can read it yourself, it's not something very difficult to remember.
नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एसडीजी इंडिया इंडेक्स। तो जो केरला है वो टॉप रैंक उसने जो है सिक्योर किया नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में। और मिज़ोरम, हरियाणा और उत्तराखंड जो है वो सबसे अच्छे परफॉर्मर्स रहे हैं इसमें, ठीक है। बिहार, झारखंड और असम जो है वो सबसे वर्स्ट परफॉर्मर स्टेट्स रही हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स होता क्या है। तो जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए नीति आयोग ने एक जो है इंडेक्स प्लान किया था 2018 में, और उसी का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी इंडिया इंडेक्स। तो इसी में ही जो है ऑलमोस्ट 115 इंडिकेटर्स के ऊपर के बेसिस पर जो है रैंकिंग दी जाती है स्टेट्स को। तो ये बेसिकली ये पैरामीटर्स जो है वो हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंस्टीट्यूशंस, क्लाइमेट चेंज, इन सब पैरामीटर्स के ऊपर जो है ये इंडिकेटर्स जो है वो बेस्ड है, ठीक है। दिसंबर 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, और ये सबसे प्राइमरी टूल है लोग जो स्टेट्स की प्रोग्रेस या स्टेट्स या यूटीज़ की प्रोग्रेस को रिपोर्ट करने का। जितना हाई स्कोर होगा उतना ही मतलब अच्छा परफॉर्म किया है स्टेट्स ने, ठीक है। तो अब इसमें देखो कि इंडिया का जो स्कोर है वो ऑलमोस्ट 6 पॉइंट से इंक्रीज़ हुआ है। पहले 2019 में 60 था इंडिया का ओवरऑल स्कोर ऑफ कोर्स कंट्री का, और अब वो 66 पहुंच गया है, ठीक है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इसकी एसडीजी इंडिया इंडेक्स की। इंडिया जो है वो इसको यूनाइटेड नेशन के साथ कोलैबोरेट करके वो जो है इसको लॉन्च करता है। 115 इंडिकेटर्स हैं जिनको जो है नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने बनाए हैं ये इंडिकेटर्स, उसी के बेसिस पर स्टेट्स और यूटीज़ को जज किया जाता है। फिर इससे क्या होता है कि हम स्टेट्स की जो परफॉर्मेंस जो कि वो कितनी जल्दी जो है एज जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूएन के, वो कितनी जल्दी उनको अचीव कर पाएंगे उसके ऊपर हम उनको रैंकिंग दे पाते हैं, ठीक है। अब केरला सबसे बेस्ट परफॉर्मर रहा है स्टेट्स की कैटेगरी में, और जो है चंडीगढ़ जो है वो यूटीज़ के कैटेगरी में सबसे अच्छा परफॉर्मर रहा है। इंडिया का ओवरऑल स्कोर 6 पॉइंट्स इसलिए इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि हमने क्लीन वाटर, सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए हमारा स्कोर इंक्रीज़ हुआ है। मिज़ोरम, हरियाणा और उत्तराखंड जो है वो इस बार के सबसे अच्छे परफॉर्मर्स रहे हैं। तो ये आप याद रखना, केरला स्टेट में सबसे नंबर 1 पे है, यूटीज़ जो है उसमें चंडीगढ़ नंबर 1 पे है, मिज़ोरम, हरियाणा और उत्तराखंड जो है वो सबसे अच्छे गेनर्स रहे हैं। Now let us see this topic in English. SDG India Index. So Kerala has retained the top rank in Niti Aayog's SDG India Index 2020-21, while these Mizoram, Haryana, and Uttarakhand have been the top performers, top gainers. And as usual, Bihar, Jharkhand, and Assam have been the worst performing states in this index. So, what is this index basically? You already know about United Nations Sustainable Development Goals. So, Niti Aayog has formulated this index based upon which it is ranking states and UTs as to how they are performing in these areas such as health, education, gender, economic growth, institutions, and all that, which are basically linked to sustainable development goals. Okay, so it was launched in December 2018 and it became the primary tool for monitoring the progress of UN SDGs in India. So the higher a state or a UT is performing, the higher will be the score of that state or UT. Okay, so a higher score means higher performance. What is the significance of this index? Though, so India is preparing this index. Niti Aayog is basically preparing this index in collaboration with United Nations, and there are total 115 indicators which have been formed by Ministry of Statistics and Program Implementation, and based upon these 115 indicators or parameters, the Niti Aayog is ranking these states or UTs. Okay, so it is helping us to identify how these states are performing in their duty towards achieving the sustainable development goals. So the latest findings are saying that India has the overall score of India has improved by 6 percentage points, in the 6 points basically. Uh, India had 60 points in 2019, and now it is having 66 in this year. Okay, why this increase has been noticed? Because we have performed impeccably well in clean water, sanitation, affordable and clean energy, among others. So in these parameters, India has performed very good around the country. That's why our score has increased. While Kerala is the top performer in this category of states, Chandigarh has maintained the top spot in amongst the UTs. So Mizoram, Haryana, and Uttarakhand have gained a lot during this period of time. So they are the top gainers, while Bihar, Jharkhand, and Assam have been the worst performing states. Okay, so now let us see the next topic, which is Cyber 2. तो नासा का एक रॉकेट जो है वो जो चांद को आई एम सॉरी
तारों को गिनने जा रहा है बेसिकली। तो ये वही एक प्रोजेक्ट है साइबर 2 जो कि तारों को गिनना चाहता है कि हमारे यूनिवर्स में कितने तारे हैं, ठीक है। तो इसको ये कोई पहला एक्सपेरिमेंट नहीं है, इससे पहले भी जा चुका है, लेकिन ये साइबर 2 जो है एक थोड़ा इम्प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट है। ये रफली एस्टिमेट करेगा कि हमारे पूरे यूनिवर्स में कितने तारे हैं। तो असल में हमारी अभी तक जो कैलकुलेशंस के हिसाब से कितने तारे हम गिन पाए हैं, तो हमारी जो एक नासा की स्टडी है वो कहती है कि हर गैलेक्सी में 100 मिलियन स्टार्स जो है वो एवरेज होते हैं, ठीक है। और हमारी टोटल गैलेक्सीज कितनी है, 2 ट्रिलियन। तो 2 ट्रिलियन इंटू 100 मिलियन, टोटल इतने स्टार जो है स्टार्स हमारी यूनिवर्स में हैं अभी तक की हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो वो कितने बने, 1 के आगे आप 21 ज़ीरो लगा दोगे तो उतने स्टार्स टोटल जो है हमको यूनिवर्स में लगा, हमारे अभी कैलकुलेशन के हिसाब से लगता है कि इतने स्टार्स हैं टोटल यूनिवर्स में। इसका मतलब ये भी है कि जितनी हमारी अर्थ पे सैंड है तो उसके हर एक दाने पे, हर रेत के दाने पे से 10 टाइम्स जो है वो स्टार्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं पूरे यूनिवर्स में, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं, अब ये पूरी जो कैलकुलेशन है सिर्फ गैलेक्सीज़ के बेसिस पर ही हमने जो है वो कैलकुलेट की है। लेकिन अब हमको लग रहा है कि गैलेक्सी के बाहर भी तो जो है वो स्टार्स हो सकते हैं। इसीलिए ये मिशन जो है ये गैलेक्सी के बाहर जो स्टार्स हैं उनको भी गिनने के लिए निकला है, ठीक है, निकलना है बेसिकली। यूरोपियन स्पेस एजेंसी कहती है कि सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही 100,000 मिलियन स्टार्स जो है वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये साइबर 2 जो है ये कैसे काउंट करेगा स्टार्स को, ये बेसिकली एक पैच ऑफ स्काई में जो है एक सर्वे करेगा कि इस स्काई में मतलब बेसिकली कितने जो है, अभी अर्थ के एटमॉस्फेयर से जब ये बाहर चला जाएगा तो स्काई को देखेगा कि उधर कितनी गैलेक्सीज हैं, कितनी क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज हैं। फिर ये एक्स्ट्रा गैलेक्टिक बैकग्राउंड लाइट, मतलब कि जो लाइट आ रही है जहाँ जहाँ से एक तरह से इंफ्रारेड बैकग्राउंड की जो लाइट आ रही है, कॉस्मिक इंफ्रारेड बैकग्राउंड की जो लाइट आ रही है, उन सबको जो है, जो कि बेसिकली सिर्फ स्टार्स एमिट करते हैं, उनको सबको जो है ये गिनेगा और उसके बेसिस पर एक अनुमान लगा के बताएगा कि कितने जो है टोटल स्टार्स हो सकते हैं हमारे पूरे यूनिवर्स में। तो ईएसए ने भी एक, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसने भी एक इंफ्रारेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो है हर्शल नाम की, उसको जो है वो ऑलरेडी भेजा हुआ है। तो वो नंबर ऑफ गैलेक्सीज और जो है वो काउंट कर रही है ऑलरेडी, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, साइबर 2। सो नासा हैज़ फंडेड अ रॉकेट लॉन्च एंड इट विल be basically a mission to count the number of stars that exist in our universe. So this Cyber 2 instrument is not the first one. It is an improved version of its previous it is an improved version of its previous self, and it is going to roughly estimate how much stars are there in our universe. Okay, so let us see how many stars are there in our universe in reality. Okay, so as per our current calculations, as per our current knowledge, there are 100 million stars in each galaxy, and there are almost 2 trillion galaxies in our universe. So uh, you can imagine 2 trillion into 100 million, this much will be the stars in our universe as per our current knowledge. So this comes out to be 1 with 21 zeros after it. So the number will be 1 and 21 zeros after it. This will be the total number of stars as per our current knowledge. It is also saying that for every grain of sand on earth there are more than 10 stars. So it almost, if there are 1 million, I'm just giving you an example, if there are 1 million of grains of sand on our earth, then there will be 10 million stars in the universe. But of course I'm just giving you an example. So also, as this all entire calculation is based upon the stars that which are present in our galaxy, so that we are already planning that this cyber 2 instrument will also calculate the stars which are not present in any galaxy. Okay, because we have just only counted only those stars which are present in a galaxy. Okay, so now we are going to see cyber 2 instrument will also calculate those stars which are not in a part of any galaxy. European Space Agency is saying that there are 100,000 million stars in just the Milky Way galaxy. Okay, so how Cyber 2 will count the stars? So there is a particular type of light, cosmic infrared background, which many stars emit. This Cyber 2 project will go up in the space and outside the atmosphere of the Earth, and it will monitor all these cosmic and infrared lights, and based upon this
survey, it will estimate the number of stars which are present in the universe. So ESA, the European Space Agency, has already sent a space observatory Herschel, which is counting the number of galaxies based upon this infrared background. Okay. So now let us see the next topic, which is SAGE project. तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस जो है उन्होंने सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया है, जो कि सेज पोर्ट और एक सेज पोर्टल भी लॉन्च किया है. बेसिकली ये सेज प्रोजेक्ट क्या है कि मिनिस्ट्री जो है जो सोशल जस्टिस एंड पावर मिनिस्ट्री जो है वो एक फैसिलिटेटर बनेगी, और स्टार्टअप्स जो हैं वो जो हमारे जो सीनियर पीपल हैं, जो सीनियर केयर के जिनको ज़रूरत है, जो कि ओल्ड पीपल हैं, उनको जो है ऐसे सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट्स देगी वन स्टॉप शॉप पे, कि वो जो भी उनको सर्विसेज या प्रोडक्ट्स चाहिए वो एक ही जो है वो सेज पोर्टल से बेसिकली वो प्रोक्योर कर सके. ठीक है. अब होगा क्या कि मिनिस्ट्री जो है वो एक तरह से फैसिलिटेटर का काम करेगी और ऐसे जो है स्टार्टअप्स को फंड करेगी जो कि सीनियर जो लोग हैं, एल्डरली हमारे पीपल हैं, उनके लिए प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस बनाएंगे. ठीक है. तो अब ये सेज पोर्टल जो है वो वन स्टॉप एक्सेस होगा एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का, जिसके अंदर बहुत सारे जो है वो क्राइटेरिया डाले हैं कि किस किस कौन कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपको बनाने हैं, जैसे हेल्थ, हाउसिंग, केयर सेंटर्स, टेक्नोलॉजिकल एक्सेस लिंक टू फाइनेंस, फूड एंड वेल्थ मैनेजमेंट, ऑल दीज थिंग्स जो ये सब बनाई जाएंगी. ठीक है. अब जो है एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स जो है वो प्रपोजल्स जो आएंगे स्टार्टअप्स के, कि हम ये समझ लो कि हम एक हेयरिंग एड बनाना चाहते हैं, हम इस पे सेज पोर्टल पे उसको बेचना चाहते हैं, तो ये उसके बेसिस पर ये इंडिपेंडेंट स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो एक्सपर्ट्स की वो डिसाइड करेगी कि कौन कौन से स्टार्टअप्स जो है वो एलिजिबल है, और उनको 1 करोड़ रुपए तक की, ठीक है, अप टू 1 करोड़ तक की जो है वन टाइम इक्विटी जो है वो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस उनको प्रोवाइड कराएगी. ठीक है. नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. सेज प्रोजेक्ट. सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज लॉन्च्ड दिस प्रोजेक्ट, which is SAGE, Senior Care Aging Growth Engine Initiative, and based upon that, a portal is being made so that solutions and devices or services for elderly people can be provided at one stop shop for these elderly people. So this SAGE project will identify, evaluate and verify and all these things, aggregate and deliver products and solutions and services directly to these elderly persons. So it will basically, the ministry will basically act as a facilitator to connect the startups and the elderly people, and through a portal, through this SAGE portal. And if our elderly people want to avail some services, they just need to see the SAGE portal, based upon which they can locate or basically see or avail any of the services that are these startups will be providing to them. Now what is this SAGE portal? Basically SAGE portal will be that one-stop shop or the one-stop access where these elderly care products and services by these startups will be offered to all these elderly people. Okay, so there are some areas which the ministry has specified that these startups should be functioning in these areas, and ministry will also select some startups. Basically an independent committee of experts will basically select these startups and will provide them one time equity of up to 1 crore rupees for all those startups who will be willing to provide these services or solutions to the elderly people. Okay, so now let us see the topic, caves at रश्मि हिल्स. तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 3 और केव्स जो है त्रिरश्मि हिल्स जो कि नासिक में पड़ती हैं वहाँ पर उनको मिली हैं. ठीक है. तो ये जो न्यूली फाउंड केव्स हैं, जो अभी एग्जिस्टिंग केव्स हैं उनसे भी पुरानी है, और कहा जा रहा है कि ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं वहाँ पर ये ठहरते थे. वहाँ पर वेरेंडा भी हैं और स्क्वायर स्टोन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बैठ के जो है ये मॉन्क्स जो है वो अपनी मेडिटेशन करते थे. स्पेशल अरेंजमेंट्स भी हैं मॉन्क्स के लिए जहाँ पर वो मेडिटेट करते थे. ठीक है. और अब ये त्रिरश्मि केव्स कौन सी हैं? इनको हम पांडवलेनी केव्स भी कहते हैं. ये 25 केव्स हैं, टोटल ग्रुप ऑफ 25 केव्स हैं ऐसी, जो कि ये नासिक में हमको मिली हैं. ठीक है. और ये त्रिरश्मि हिल्स में से कार्व आउट की हुई हैं 2nd सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी AD के बीच में. ये एक ASI प्रोटेक्टेड साइट है बेसिकली, और ये हीनयान ट्रेडिशन जो है बुद्धिज़्म का उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं. अब महायान और हीनयान के बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं. महायान बुद्धिज़्म कहता है कि जो गौतम बुद्ध हैं वो भगवान थे, वो डिवाइन बीइंग थे, और उनका काम ये था कि वो अपने फॉलोअर्स को निर्वाण देने आए थे. लेकिन हीनयान बुद्धिज़्म क्या कहता है कि नहीं, वो भगवान नहीं थे, वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग थे जिन्होंने लिबरेशन ले ली थी, जिन्होंने निर्वाणा ले लिया था, और वो
कोई भगवान नहीं थे, वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग थे। यही जो हिनयान है, ये हिमयान लिखा गया है, ये हिनयान बुद्धिज़्म है। तो हिनयान वाली ही जो जो है असल में बुद्ध, जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने भी यही बोला था कि आई एम नॉट, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ जिसने जो है निर्वाणा ले लिया है। तो मेरे से पहले भी बहुत से बुद्ध आए थे, मेरे बाद भी बहुत से बुद्ध आएंगे। बुद्ध वो है जो भी निर्वाण ले लेगा, ठीक है। जो थेरावदा स्कूल जो है हिनयान सेक्ट का ही एक पार्ट है। और जो इस महायान बुद्धिज़्म है वो कहाँ कहाँ फेमस हुआ, चाइना, साउथ में, ठीक है, तो तिब्बत, जापान और ये कोरिया, ठीक है, इस एरिया में ज़्यादातर ये महायान बुद्धिज़्म जो जो कि बुद्ध को भगवान मानता है, वो बुद्धिज़्म फेमस हुआ, ठीक है। जो हिनयान बुद्धिज़्म है वो हमारे साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया वाला जो ये श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस वाला रीजन है, वहाँ पर ज़्यादा फेमस हुआ। महायान बुद्धिज़्म जो है उसमें उसके जो मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्चर्स हैं वो संस्कृत में लिखे हुए हैं। हिनयान बुद्धिज़्म के जो स्क्रिप्चर्स हैं वो बेसिकली पाली में लिखे हुए हैं, ठीक है। ये कब से फ्लरिश होना शुरू हुआ, 500 बीसी से, ठीक है। और ये कब से शुरू हुआ, 250 बीसी से, लेकिन सबसे पुराना हिनयान ही है, ठीक है। और हिनयान बुद्धिज़्म जो है वो मोस्ट क्लोज, सबसे क्लोज है जो असल बुद्धिज़्म, जो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स थी, ठीक है। So now let us see this topic in English. Caves at Three Rashmi Hills. So Archaeological Survey of India has found three more caves in Three Rashmi Hills, which is present in Nashik, Maharashtra. These newly found caves are believed to be older than Three Rashmi caves, and the ASI is saying that this could be the dwelling sites for Buddhist monks, because they have found some veranda, square stone platform for monks where they used to meditate and they used to rest for during their day. Okay, special arrangements for monks have been found in these caves where they used to meditate. Okay, so what are these three Rashmi caves? So three Rashmi caves or Pandavleni caves are basically a group of 25 caves located at three Rashmi hills. They are carved out of these three Rashmi hills. It's an ASI protected site and it belongs to the Hinayan tradition of Buddhism. So let us see the difference between Mahayana and Hinayan. So Mahayana Buddhism says that Gautam Buddha was almost a divine being or God himself who came upon our earth to help his followers to attain nirvana. But Hinayan Buddhism is saying, I'm sorry, this is Hinayan, it's not Himyan. So Hinayan Buddhism, in Hinayan Buddhism, the followers they say that Gautam Buddha was not God or he was not a divine being. He was just an ordinary human being who attained nirvana through meditative practices. And Theravada Buddhism is the oldest sect of Buddhism, and it belongs to Hinayan Buddhism itself. Okay, so for Mahayana Buddhism, the followers can be found in China, South Korea, uh, Japan, Tibet, and Hinayan Buddhism followers are basically located in Southeast Asia. And the scriptures of Mahayana Buddhism are written in Sanskrit, while the scriptures of Hinayan Buddhism are written in Pali. Okay, so this Hinayan Buddhism is basically more close to actual teachings of Buddha, because he used to say himself that he's not a God or a divine being. He is just an ordinary human who has managed to attain nirvana through his meditative technique, which is also called vipassana. Okay, so this Gautam Buddha attained this nirvana, and he was just an ordinary human being according to himself, and he was strictly against forming any religion based upon his name. He even told his followers that the moment you make a religion out of me, you have it would mean that you have not understood my teachings. Okay, but we all know what has happened after him. So anyways, these were our topics for today. We'll meet next time on Monday. Until then, goodbye and take care.